Hello everybody and welcome to Learn with Zenith Guru. My name is Pratyaksha और इस वीडियो में हम ने जो ऑलरेडी पार्ट ए में कंप्लीट कर लिया था फ्रेंच रेवोल्यूशन का हाफ चैप्टर उसे कंटिन्यू करेंगे एंड वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. तो जो नेशनल असेंबली थी उसने अपना ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर लिया था कब 1791 में, और उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि वो लिमिट करना चाहते थे पावर्स को मोनार्क की. These powers, instead of being concentrated in the hands of one person, were now separated and assigned to different institutions. जो कि हमारे तीन वो होते हैं गवर्नमेंट के पास, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. ओके, सो ये हमारे जो तीन पार्ट होते हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, उन तीनों के हिस्सों में ये पावर्स चली जाएंगी. पहले एक ही इंसान के हाथ में थी जो कि थे द किंग. दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. ठीक है, इससे क्या हो गया, फ्रांस हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गई. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या हो जाएगी, जिस स्टेट में आपके कॉन्स्टिट्यूशन भी है और किंग एंड क्वीन का भी रूल है, मतलब वही आपके मोनार्क्स का भी रूल है. ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे. देखिए, पैसिव सिटीजन जो वोट नहीं कर सकते, अबाउट 3 मिलियन मेन, विमेन, चिल्ड्रन एंड यूथ बिलो 25. एक्टिव सिटीजन जो कि आपका वोट कर सकते हैं, अबाउट 4 मिलियन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 28 मिलियन वर अलाउड टू वोट, दे वर एलिजिबल फॉर वोट. ठीक है, so they would vote and select the judiciary directly. Then they would vote. फिर electors में आ जाते हैं आपके 50,000 men. They would form the national assembly of 745 members, जो कि आपके legislature हो गए. Then this would control the ministers and एग्जीक्यूटिव में, और फिर आपकी वीटो पावर थी किंग के पास, और ये किंग को भी काफी हद तक कंट्रोल करते जो आपका लेजिस्लेचर था वो. तो इस तरह से आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी वो वर्क कर रही थी. फिर 1791 के जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने क्या कर दी, पावर्स टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली, उसको पावर ये दे दी, विच वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड. अभी हमने ऊपर पढ़ा वो कैसे इलेक्ट हो रही थी. That is, citizens voted for a group of electors who in turn chose the assembly. अब जैसे यहाँ इंडिया में क्या होता है कि हम डायरेक्टली वोट करते हैं, बट यहाँ पे क्या था कि जैसे हमारे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं कि हम उसके इनडायरेक्ट इलेक्शंस कहते हैं हम, कि हमने जिन्हें वोट किया करके चूज किया है वो प्रेसिडेंट इलेक्ट कर रहे हैं. वैसे ही यहाँ पे हो रहा था कि ये वोट करके एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को चूज करते थे एंड देन दे यूज्ड टू वोट एंड चूज द लेजिस्लेटिव असेंबली. तो यहाँ पे क्राइटेरिया क्या था, ओनली मेन अबव 25 इयर्स, women were not allowed, ऑफ एज जो कि पे करते थे टैक्सेस इक्वल टू 3 days ऑफ लेबरर्स वेज, ओनली दे वर अलाउड टू वोट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट कैन बी आस्क्ड एज द क्राइटेरिया फॉर वोटिंग, और पीपल हु वर एलिजिबल फॉर वोटिंग, उनका क्राइटेरिया क्या था, क्या उनका एलिजिबिलिटी था. The remaining men and all women were classed as passive citizens because they were not allowed to vote. And do remember that women were not allowed to vote. To qualify as an elector and then as a member of assembly, a man had to belong to highest brackets of taxpayers. Okay. जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इट बिगैन विद डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, राइट्स सच एज राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ वर एस्टैब्लिश्ड एज नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स. So again you can come across a question from this chapter that what according to the new constitution in France were natural and inalienable rights. So you will be listing these ones. Now they belonged to each human being by birth and could not be taken away. It was the duty of the state to protect each citizen's natural right. Okay. Now here are a few political symbols. Broken chain means chains were used to fetter slaves. Broken chains were act of becoming free. So this indicated freedom. Now, bundle of rocks and faces. One rod can be easily broken but not an entire one. So this indicated unity.
Then eye within a triangle radiating light. The all-seeing eye stands for knowledge. The rays of the sun will drive away the clouds of ignorance. This basically meant knowledge and inclusion. Now, symbol of royal power. This was the scepter. And then snake biting its tail, symbol of eternity. A ring has neither beginning or nor end. Okay. Red Phrygian cap worn by a slave upon becoming free. Again, this indicated word, it indicated freedom. Then blue, white, red, the national colors of France. The winged women, personification of law. The law tablet. The law is same for all. This denoted equality. Okay. Now, let's see how France abolishes monarchy and it establishes or becomes a what? A republic. And I guess we'll have a few things and then, yeah, right. Okay. तो सिचुएशन थी फ्रांस में वो टेंस थी फॉलोइंग इयर्स में ऑल्दो लुइस हैज साइन कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह तब भी प्रॉब्लम्स जो थी वो खत्म नहीं हो रही थी. He entered into secret negotiations with the king of Prussia. Rulers of other neighboring countries too were worried by the developments in France and made plans to send troops to put down the events had been taking place since their समझ 1708 में. अब क्या हुआ जब ना किसी एक कंट्री का प्रोग्रेस होता है सबसे ज्यादा टेंशन में कौन आ जाते हैं उसके नेबर्स. अब इंडिया अगर कोई नई मिसाइल टेस्टिंग कर ले सबसे ज्यादा टेंशन में कौन आ जाएगा? चाइना और पाकिस्तान. तो वैसे ही वहां के भी नेबर्स जो थे वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए और उनको ये लगा कि हम ट्रूप्स भेज देते हैं ताकि थोड़ा क्योस क्रिएट हो. इवेंट्स जो इतनी मस्त स्पीड से अच्छे से डेवलपमेंट में हिस्सा दे रहे हैं वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं वो कम हो. ठीक है. National Assembly voted in April 1792 to declare war against Prussia and Austria. ठीक है. Thousands of volunteers thrown from the provinces joined the army. फिर उसके बाद war हुई. They saw this as a war of people against kings and aristocracies of all over Europe. ठीक है. Aristocracies क्या होती है? जहाँ पे aristocrats जो बहुत ज्यादा अमीर लोग होते हैं आपके king and queen होते हैं उनका रूल होता है और वो बहुत ज्यादा आपका ब्रूटल बिहेवियर करते हैं जो लोग उनके नीचे होते हैं उनसे. Among the patriotic songs they sang Marseillaise. I'm sorry, I guess it is French if I am pronouncing it wrong, but I would pronounce it Marseillaise. Composed by the poet Roger de Lisle. Again, I'm sorry if I pronounced it wrong. It was sung for the first time by the volunteers of Marseille as they marched into Paris and so got its name. The Marseillaise is now the French national anthem. अब देखिए, Revolutionary wars brought losses and economic difficulties to the people. ठीक है, obviously जब भी लड़ाई होती है तो इकोनॉमी सफर करती ही करती है. Sorry for the sound. While the men were away fighting at front, women were left to cope with tasks of earning living and looking after their families. अब जो फैमिली के मतलब मेन थे वो तो चले गए लड़ने. अब ब्रेड विनर तो वही थे उस टाइम पे फैमिलीज के. अब विमेन वो हेडेड विद द टास्क कि वो कैसे पैसे कमाए, फैमिली के मतलब फैमिली को देखे, उन्हें कुछ लीस्ट भी आप प्रोवाइड करोगे तो खाना तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा ना, उसके लिए भी पैसे चाहिए. उसके बाद the last section of population were convinced that the revolution has to be carried further as a constitution of 1791 gave political rights only to the richest sections of the society. So political clubs became an important rallying point. वो rally करने लगे people who wish to discuss government policies and planned their own forms of action. The most successful of the clubs was that of Jacobins, which got its name from convent of Saint Jacob in Paris. तो ये आपको याद करना पड़ेगा which was one of the most successful of the clubs. Women too who had been active through this period formed their own clubs. ठीक है. अब देखते हैं जो members थे Jacobin club के
belonged mainly to less prosperous sections of the society, मतलब जो इतने अमीर नहीं थे, इतना पैसा नहीं था वो लोग। अब इसमें कौन थे? आपके स्मॉल शॉपकीपर्स थे, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स एक्सेट्रा, ये सारे लोग थे। और इनके लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, ठीक है। लार्ज ग्रुप अमंग द जैकोबिन्स डिसाइडेड टू स्टार्ट वेयरिंग लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, सिमिलर टू दोज वोन बाय डॉक वर्कर्स, जो लोग डॉक पे काम करते थे उनके जैसा मिलता जुलता। This was to set themselves apart from the fashionable sections of the society, especially nobles who wore knee breeches, ठीक है। तो वो खुद को अलग दिखाना चाहते थे nobles से। It was a way of proclaiming the end of power wielded by the wearers of knee breeches. हर इंसान का अपना एक तरीका होता है, एक resemblance होता है अपने protest का। तो इनका ये था कि जो अमीर सेक्शन सोसाइटी का है, जो नोबल्स है वो पहन रहे हैं, हम उसे नहीं पहनेंगे, ताकि हम ये डिपिक्ट कर सके कि हम उनके रूल को एंड करना चाहते हैं। जैकोबिन्स को बाद में लोग क्या बोलने लगे? सांस क्लोथ्स। क्लोथ्स चलते हैं तो गर्ल्स स्टडिंग माइट नो क्लोथ्स क्या होते हैं? नी लेंथ से थोड़े नीचे के आपके प्लाजो जैसे वो होते हैं, which literally mean those without knee breeches. Sans clothes, men wore in addition the red cap that symbolized what? तो आपसे ये पूछ सकता है that what were the symbol, like what particular piece of cloth symbolized what in context to Jacobins? तो आपके sans clothes वो क्या लिटरली मीनिंग था? those without knee breeches, जो पावर एंड करना चाहते थे वो wearers of knee breeches के। उसके बाद रेड कैप क्या सिंबलाइज करती थी? आपकी लिबर्टी, बट women however were not allowed to do so, ठीक है। फिर समर 1792 में the Jacobins planned an insurrection of a large number of Parisians who were angered by short supplies and high prices of food, ठीक है। फिर on the morning of August 10th, they stormed the palace of Tuileries, massacred the king's guards, and held the king himself as hostage for several hours, ठीक है। king को ही बंदी बना लिया। Later, the assembly voted to imprison the royal family. Elections were held. From now, all men of 21 years and above, regardless of wealth, got the right to vote. पहले ऐसा नहीं था, but you should remember that still women were not allowed to vote. It was just men, and the tax barrier got removed. अब जो नई नई असेंबली इलेक्ट हुई थी उसे हम क्या बोलेंगे? कन्वेंशन। फिर उसके बाद 21 सितंबर 1792 में उसने अबॉलिश कर दी मोनार्की को और डिक्लेयर कर दिया फ्रांस को एज रिपब्लिक। As you know, a republic is a form of government where the people elect the government including head of the government. ये हमें पता है रिपब्लिक का मतलब। इंडिया भी क्या है? एक रिपब्लिक है, उसमें कोई हेरिडेटरी मोनार्क नहीं होता है। Louis XVI was sentenced to death by a court on charge of treason. Treason का मतलब क्या होता है? Betrayal of one's country or government. Because if you remember, he entered into a secret pact. उसके बाद 21 जनवरी 1973 में उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया था पब्लिकली एज प्लेस de la Concorde. The Queen Mary Antoinette met with the same fate shortly after. So both Queen and King were executed. Now we will study the Reign of Terror. Reign of Terror क्या था? जो पीरियड था 1793 से 94 का, उसे हम कहते हैं रीन ऑफ टेरर। क्यों? क्योंकि जो रॉबेस्पियर थे उन्होंने पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट फॉलो की, ठीक है। जिनको भी वो देखते थे एज बीइंग एनिमीज ऑफ द पब्लिक, एक्स नोबल्स, क्लर्जीमैन वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उन सबको क्या कर देते थे? इम्प्रिजन कर देते थे और रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल से एंड देन दे वर ट्राइड। इफ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी तो दे वर guillotined. The guillotine is a device consisting of two poles and a blade with which a person is beheaded. मतलब एकदम पूरा वो क्या कहते हैं, मुगलों की भाषा में कहते हैं सर कलम कर देना, मतलब खत्म सर। It was named after Dr. Guillotine who invented it. It was really very brutal. तो इनकी गवर्नमेंट ने इशू करे लॉ placing maximum ceiling on wages and prices. Meat and bread were rationed.
Peasants were forced to transport their grain to the cities and sell it at fixed price by the government. ठीक है, तो ये आप फीचर्स मान सकते हैं रॉबस्पेयर की गवर्नमेंट के. ठीक है, पीजेंट्स को फोर्स करना था कि फोर्स करके ट्रांसपोर्ट से करवाते थे उनके ग्रेन्स को सिटीज में और उनको फिक्स प्राइस में. मतलब अगर गवर्नमेंट ने बोला कि तुम 1 रुपए किलो ही चावल बेचोगे, तुम 1 रुपए किलो ही चावल बेचोगे. The use of more expensive white flour was forbidden. All citizens were required to eat the plain diaglite equality bread, a loaf made of whole wheat. Equality was also sought to be practiced through forms of speech and address instead of traditional monsieur, sir and madam. ठीक है, तो आप जैसे किसी को सर या मैडम ऐसे नहीं, मतलब आपको इक्वालिटी प्रैक्टिस करनी थी एड्रेस करने में भी. ठीक है, all French men and women were henceforth citoyen and citoyenne. No more sir and madam were to be used. चर्चेस को शट डाउन कर दिया गया था और उनके बिल्डिंग्स को कन्वर्ट कर दिया था बैरक्स या फिर ऑफिसेज में. उसके बाद इन्होंने अपनी पॉलिसीज को इतना रिलेंटलेसली किया परस्यू दैट इवन हिज सपोर्टर्स बिगेन टू डिमांड मॉडरेशन. भाई थोड़ा तो कम कर दो, ये तो बहुत ही ज्यादा हो रहा है. फाइनली ही वाज कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन जुलाई 1974. उनको अरेस्ट कर दिया गया था एंड देन नेक्स्ट डे इन्हीं की टेक्निक इन्हीं पे अपना दी थी, गिलोटिन की. Now let's see what was the Directory rules France. The fall of Jacobin government allowed the wealthier middle class to seize power. Okay, remember we studied in the other video, the previous video, that how the middle class was emerging. A new constitution was introduced which denied the vote to not propertied sections of the society. Okay, I think it denied the vote to the नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जिनकी प्रॉपर्टी नहीं है वो वोट नहीं कर सकते. इट प्रोवाइडेड 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स. ठीक है, अपॉइंटेड द डायरेक्टरी एंड एग्जीक्यूटिव मेड अप 5 मेंबर्स. दिस वाज मेंट टू सेफगार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर जैकोबिन. तो ये आप नया मान सकते हैं रूल. तो यहाँ पे आपके न्यू फीचर्स पूछ लेंगे. ओके, the political instability of the Directory paved the way for the rise of military dictator Napoleon Bonaparte, जिनका नाम बहुत ही फेमस है वर्ल्ड हिस्ट्री में. ठीक है, अब कौन आया है मिलिट्री डिक्टेटर? नेपोलियन बोनापार्टे. Although all these changes in the form of government, the ideals of freedom, of equality before the law and fraternity remained inspiring ideals that motivated political movements in France and rest of Europe during the following century. आगे बढ़ते हैं. Did women have a revolution? अब हमने ना पता है पूरा हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑलमोस्ट जो भी था आपका पढ़ा, बट इसमें विमेन का कहीं आपको मेजर पार्ट दिखा ना. Neither they were allowed to vote, neither they were joining various parties, neither they were protesting so vigorously. So why was that happening? Because they were not allowed a revolution. They were not allowed to participate. Now let's see, women had a revolution for their rights. तो देखिए, beginning से ही women were active participants in the events which brought about so many important changes in French society. But what was main? They were not allowed to vote. And they were not seen in the mainstream, right? They hoped that their involvement would pressurize the revolutionary government to introduce measures to improve their lives. तो most women क्या थे? थर्ड स्टेट के थे और उनको वर्क करना पड़ता था अपने लिविंग के लिए. They worked as seamstresses or laundresses, sold flowers, fruits and vegetables at the market, etc. Most women did not have access to education or job training. They were neither given some professional job training, nor they were allowed to, or had access to education. हमेशा जो ये बड़ी बड़ी ऐसी चीजें थी ना, वो मोस्टली जो नोबल या फिर क्लर्जीमैन के फैमिलीज की औरतें होती थी उन्हें ही अलाउड होता था. सेम चीज देख लीजिए. Only a daughters of nobles and wealthy members of the third state could study at convent, after which their families arranged a marriage for them. Working women had also take care of their families, that is to cook, fetch water, queue up for bread and look after children. Their wages were lower than those of men. तो ये जो वेज डिस्पैरिटी है, इक्वल पे आने के बाद भी ये तो बहुत ज्यादा चलता है. सो तब से आज तक कोई मेजर डिफरेंस इसमें उतना आया नहीं है.
In order to discuss and voice their interest, women started their own political clubs and newspapers. ठीक है? 60 women's club came up in different French cities. Society of Revolutionary and Republican Women was most famous of them. तो ये आपसे पूछ सकते हैं, क्या हो गया आपका? Society of Revolutionary and Republican women. ये क्या हो जाएंगे आपके? Examples of political clubs and newspapers started by women. तो इनकी डिमांड क्या थी? Was women enjoy same political rights as men because they were not allowed to vote. ये भी आपका important हो जाता है. Women disappointed by the Constitution of 1791, which reduced them to passive citizens. Who were passive citizens? Passive citizens were the one who were not allowed to vote. They demanded the right to vote, to be elected to the assembly and hold political positions. ये आपका हो सकता है list demands of women revolution. ठीक है? Only then they felt would their interests be represented in the new government. ठीक है? उसके बाद देखते हैं अर्ली ईयर्स में क्या हुआ था. रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए थे ऐसे लॉज व्हिच हेल्प इंप्रूव द लाइव्स ऑफ वुमेन. उसके बाद टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल, स्कूलिंग वाज मेड कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स. उसके बाद देयर फादर could no longer force them to get married. ये लॉ तो भाई हर कंट्री में इम्प्लीमेंट होना चाहिए. दैट women cannot be forced to get married, okay, as long as it's their will. Marriage made into a contract entered freely and registered under civil law. ठीक है? Divorce को legal कर दिया गया था and could be applied for both men and women. Women could not train for jobs, could become artists and run small businesses. Women's struggle for equal political rights, however, continued. ठीक है? उसके बाद reign of terror में the new government issued laws ordering closure of women clubs and banning their political activities. ठीक है? अब वो इसके भी अगेंस्ट हो गए. Many prominent women were arrested and number of them were even executed. Women's movement for voting rights and equal wages continued to next 200 years in many countries of the world. Indians were lucky enough that our constitution already had women rights. The fight for the vote was carried out through an international suffrage movement during the late 19th and early 20th centuries. उसके बाद example of political activities of French women during the revolutionary years kept alive as an inspiring memory. It was finally in 1946 that women in France got the right to vote, and we must remember it, that when did they finally get the right to vote. Now let's read about the abolition of slavery. And then we have revolution of everyday life, and we'll be ending with the chapter. It is a pretty big chapter and it is difficult to go up and like to be in a pace with all the given details. So we'll also be coming up with a tutorial or techniques to learn it, so do not worry. तो देखिए सबसे आपका था जैकोबिन रिजीम का सबसे रेवोल्यूशनरी था जिन्होंने अबॉलिश कर दी थी स्लेवरी फ्रेंच कॉलोनीज में. ठीक है? ये सब आपकी कॉलोनीज थी. The reluctant Europeans to go work and in distant and unfamiliar lands too meant a shortage of labor and on the plantation. ठीक है? So this was met by the triangular slave trade between Europe, Africa and the America. The slave trade began in 17th century for French merchant sails from boats of Bordeaux, Nantes to African coast, where they bought slaves to local chieftains. Branded and shackled, the slaves were packed tightly into ships for 3 months long voyage along the Atlantic to Caribbean. They were sold to the plantation workers. ये होता था वहाँ पे slaves के साथ. ठीक है? Exploitation होती थी बहुत ज़्यादा slaves की. 18th century में सब little criticism of slavery चला फ्रांस में. उसके बाद National Assembly had long debates about whether the rights of man should be extended to all French subjects, including those in the colonies, but वो pass नहीं हुआ. फिर वो finally the convention which in 1974 legislated, ये नया जो आपका लेजिस्लेचर या प्राइम पार्लियामेंट आया था, टू फ्री ऑल स्लेव्स. उसके बाद
Napoleon introduced slavery. 10 years later, Napoleon reintroduced slavery. उन्होंने वापस से slavery को introduce कर दिया. Plantation owners understood their freedom as including the right to enslave African Negroes in pursuit to their economic interests. Slavery was finally abolished in French colonies in 1848. So अगर आपसे पूछे who reintroduced slavery तो आप किसका नाम लेंगे? Napoleon का. Emancipation का मतलब तो act of freeing Negroes कौन सा term used for indigenous people of Africa south of the Sahara. It is derogatory term not in common use any longer. ठीक है, तो अगर आप किसी को Negro बोल रहे हैं, so it is very derogatory. Kindly do not use it. You may rather use Afro-Asians or Africans. Now let's see the revolution on the everyday life. One important law that came into effect after the storming of the Bastille in the summer of 1798 was abolition of censorship. ठीक है, censorship को ही उन्होंने क्या किया था? Abolish कर दिया था. Freedom of the press also meant opposing views of Vince expressed. Each side sought to convince the other in position through the medium of print. So वो play, songs, and festive processions attracted a large number of people. This way, one would grasp and identify with ideas such as liberty or justice that political philosophers wrote about in lengthy texts. ठीक है? And with this, I guess we have completed the chapter. All we are left with is the conclusion. So 1804 में Napoleon Bonaparte crowned himself as Emperor of the France, and then he is set out to conquer neighboring European countries, disposing dynasties and creating kingdoms. Napoleon saw his role as modernizer of Europe. ठीक है, उसके बाद ये Waterloo, War of Waterloo, Battle of Waterloo बहुत important है because he was defeated, and then many of his measures that carried the revolutionary ideas of liberty and modern laws to other parts of the Europe had an impact on people after Napoleon had left. और Napoleon ने ही reintroduce किया था slavery को, ये भी आपको याद रखना है. Ideas of liberty and democratic rights were most introduced. Important. Legacy of French Revolution. These spread from France to the rest of Europe during the 19th century, where feudal system were abolished. ठीक है. Colonized people revoked the idea of freedom from bondage into movements to create sovereign nation state. Tipu Sultan and Ram Mohan Roy. Examples of two individuals respond to ideas coming from revolutionary France. क्योंकि जब इंडिया में सारे रेवोल्यूशंस चल रहे थे तो फ्रांस में, तो इंडिया में भी लोग इससे इंस्पायर हो रहे थे. और इंडिया में कौन तो रेवोल्यूशनरी इंस्पायर हुए थे? टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन रॉय. So with this, we have completed with the chapter. Do watch the part A and this is the part B. Thank you for watching the video and stay connected to our channel.